गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लोबल फूड वेपनाइजेशन और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ हैं। एट द आउटसेट, let me welcome Major Harsha Kakkar to Ghana Shot. Harsha, Thank you, welcome to sir. Ghana Shot. Thank you, sir. Right? And it's a pleasure to have you here. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि Major Harsha, General Harsha Kakkar and I go back to the times when we were majors, young majors, probably newly married, new families that time, and we have grown together. He's also from artillery, and he's very qualified. He's been abroad on a UN mission, and he's done a staff college, and he's been in the College of Defense Management. And then after retirement, he's taken up writing. और ये इतने लिखते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ कितने लिखते हैं ये रोज हर रोज तो ये एक कॉलम कहीं किसी किसी न्यूज़पेपर में लिखते रहते हैं। आज ही इन्होंने एक लिखा है ब्रिक्स के ऊपर, स्टेट्समैन में। तो एक्चुअली जो है मैं पढ़ता रहता हूँ, पर किस में प्लेटफॉर्म में लिखते हैं मैं उसका मेरा ट्रैक ही नहीं रहता। राइट। और ये मेरा गलती है, मैं मानता हूँ सबके सामने। मेरा पुराना दोस्त, राइट, और इतना अच्छा लेखक को मैं गनर शॉट में इतना लेट लेके आया। सो वी आर गोइंग टू मेक अमेंड्स फॉर दिस, and I must publicly apologize to Harsha for this. No, sir, not at all. No, I know it's I feel bad, and we'll make it more often because I cannot leave out such a uh, reputed writer and thinker out of Gunner Shot, and खास करके who I'm known for सदियों से. Okay, Care. Today we are going to talk of an interesting subject, weaponization of food. ये क्यों है? आजकल हम सब जब when we talk of international powers and great powers and all, हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, मिलिट्री पावर के बारे में बात करते हैं, डिप्लोमेटिक पावर के बारे में बात करते हैं। पर पिछले 2-3 साल में अगर आप देख रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके तहत खाने का किल्लत पड़ रहा है बहुत लोगों को, बहुत देशों में। फूड सिक्योरिटी जो है वो इश्यूज में आ रहा है। बहुत लोग, खास करके ये कोविड के दौरान और ये आजकल जो क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है बहुत इलाकों में, तो कंट्रीज आर गोइंग विदाउट फूड, एंड इसके तहत फूड इज नाउ अ न्यू सोर्स ऑफ पावर एंड अ न्यू वेपन, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। पर इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, मैं 2 ग्राफ आपको दिखाना चाहता हूं जो वर्ल्ड बैंक ने पुट अप किया था। आप देखिए इस ग्राफ को, ये फूड इन्फ्लेशन हीट मैप है, जहां फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। और ये लाल रंग में जो दिख रहा है, ये इसमें अमेरिका भी है, पूरा नॉर्थ अमेरिका है, बहुत ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अफ्रीका, कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया, कंप्लीट यूरोप। अगर आप बहुत किल्लत जहां है, आप देखिए पाकिस्तान, ईरान, इराक, अर्जेंटीना, इन सब देशों में इट इज ओवर 30% इन्फ्लेशन। अगर आप इसी चीज को एक और नजरिया से देखोगे, द रियल फूड इन्फ्लेशन विच इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, उस देश में एक और दृश्य नजर आता है। अगर आप देखिए अमेरिका में तो है ही इन्फ्लेशन, अब चाइना भी आ गया प्रॉब्लम एरियाज में, ठीक। तो पर आप यहां देखिए, यहां जो है भारत का रंग हरा है, यहाँ एक्चुअल फूड, रियल फूड इन्फ्लेशन लेस देन 0 है। क्यों? हम फूड सरप्लस नेशन हो गए। एक जमाना था जब PL 480 का जमाना था, हर्ष यू विल रिमेम्बर, कि जब शिप से लेकर राइट उतरता था बोरी और सीधा मुंह तक पहुंच जाता था,
शिप टू माउथ होते थे PL480 के जमाने में. So it is a major change. उस जमाने से we are one of the biggest milk producers and we are biggest grain producers. हम export करते हैं. So we are in a strong position as a power, national power, as a global power. But आज जो है ये ग्लोब, ये जो खाने का सामग्री का उत्पादन का एक और पहलू देखें, किस तरीके से दुनिया में इसको वेपनाइज किया जा रहा है. और इसके लिए मैं I'll hand you over to General Kakar. All yours. Just tell me when you want me to add your slides. I'll just add them on. I'll do that. I'll manage that, Yeah. sir. Not a problem. Yeah. If I need it, if I Okay. get stuck, I'll get back. Yeah. Thank you, sir. Very kind words. Let me start with something जो मैं आज पढ़ा हूँ, a quote by Henry Kissinger, who said, "You control oil, you control nations, you control food, you control the people." And weaponization of food in recent times कब सामने आया? It came up during the Ukraine war when Russia walked out of the grain deal. Before we get down to and to understand this entire concept, let us start looking at what the grain deal was. हर्ष, एक चीज आप थोड़ा हिंदी में भी इंग्लिश में भी हाँ बात हाँ, कीजिए, क्योंकि आधे ध्यान से. हमारे काफी लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते. और उसी प्रकार काफी लोग हमारे जो हैं वो हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं. सो यू हैव टू गो टू वेज, राइट? या Okay. Now grain deal जो थी, last year when Russia invaded Ukraine February 22 में, पहला काम उसने किया, उसने ब्लैक सी पोर्ट्स पूरे ब्लॉक कर दिए. ऑटोमेटिकली 20 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन जो यूक्रेन में था, जो एक्सपोर्ट के लिए था, वो ब्लॉक हो गया. ग्लोबली फूड प्राइसेस सॉर्ड, शॉर्टेजेस होने लगे. वर्ल्ड बिगैन अप्लाइंग प्रेशर. 4 महीने बाद जुलाई 2022 ग्रेन डील पे एग्री हुआ. इट इज सेड टर्की वाज इन्वॉल्व्ड, बट सबको पता है बिहाइंड द सीन्स इंडिया प्लेड अ मेजर रोल. उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक कॉरिडोर एग्री किया इन द ब्लैक सी टू 3 यूक्रेनियन पोर्ट्स. अब कॉरिडोर में जो शिप्स आती, रशिया शिप्स को वेपन्स के लिए चेक करती, डिले करते, बट कम वॉट एवर 33 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स यूक्रेन से निकल गए. नाउ यू कैन लुक एट द इंपैक्ट. जैसे ग्रेन निकला, ग्लोबल प्राइसेस 20% ड्रॉप हुआ. दुनिया में बातचीत चल रही थी दैट मोस्ट ऑफ द ग्रेन वाज गोइंग टू डेवलप्ड कंट्रीज, और एंड रशिया वाज अनहैप्पी बिकॉज यूरोप का स्टॉक्स बढ़ रहा था. बट यूएन का रिपोर्ट स्टेट्स 57% वेंट टू डेवलपिंग और 43% टू डेवलप्ड. स्लाइड में आप पढ़ सकते हो मेन रेसिपिएंट्स चाइना, स्पेन, टर्की एंड इटली. और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लास्ट लाइन. 725,000 टन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिहाज से अफगानिस्तान, जिबूटी, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, सूडान, येमेन और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में गया. एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके स्लाइड में ही. मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप देखिए दूसरा लास्ट पॉइंट में दूसरा लाइन, चाइना भी एक रेसिपिएंट था. इसमें क्या है, जो हमने पहले फूड इन्फ्लेशन वगैरह दिखाया, चाइना ऑल्सो नीड्स फूड फ्रॉम आउटसाइड, और इसके बारे में आगे बात भी करेंगे. या प्लीज. इस साल 17 जुलाई एग्जैक्टली तकरीबन 1 साल बाद रशिया ग्रेन डील से बाहर निकल गया. रीजन उनके अपने डिमांड्स थे. उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं था फूड शिपिंग का, पर उनके ऊपर मेजर रिस्ट्रिक्शन था इंश्योरेंस ऑफ शिप्स और पेमेंट सिस्टम, क्योंकि रशिया पेमेंट मॉड्यूल से बाहर निकल गया था. एंड रशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फूड और फर्टिलाइजर, एंड इस साल उनका बम्पर क्रॉप है. अब जब तक आप रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट नहीं करोगे, इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी नहीं होगा. अच्छा, रशिया के जो कंपनीज है जो फूड और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनके अकाउंट्स बाहर ब्लॉक्ड है. तो जैसे रशिया ने ये एक्शन लिया, उन्होंने अगला पास किया कि
कोई भी शिप अगर यूक्रेनियन पोर्ट से निकलेगी वो लेजिटिमेट टारगेट है। और उन्होंने पहले एक्शन के साथ यूक्रेनियन ग्रेन डिपोस को अटैक किया और वास्ट क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक्स खासतौर पे वीट के डिस्ट्रॉय किया। पहले अटैक के अंदर ही तकरीबन 60,000 टन डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद सेकेंड थर्ड अटैक्स में 40,000 टन डिस्ट्रॉय हुआ। वेस्टर्न व्यू था कि रशिया यूक्रेन को ब्लॉक कर रही है और रशिया को यह मौका मिला क्योंकि जहां पे उन्होंने प्रेशर डाला अफ्रीकन नेशंस और बाकी जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं वो खड़े हो गए और उनका डिमांड था कि ये लिफ्ट होना चाहिए, जो ग्रेन डील पुराना वापस अग्रीमेंट होना चाहिए एंड रीशिपिंग शुड स्टार्ट। यूक्रेन ने ट्राई किया कि हम ब्लैक सी पोर्ट से डैन्यूब पोर्ट्स पे जाए, पर रशियन मिसाइल्स ने इसको भी टारगेट किया। अब उन्होंने एक ब्लैक सी के अंदर एक शिप के ऊपर भी हमला किया। यूक्रेन का प्रॉब्लम एक और है, वो कोशिश कर रही है कि वो बाकी यूरोपियन पोर्ट्स को इस्तेमाल करें, पर यूरोपियन कंट्रीज खासतौर पे उसके नेबर्स, उनके साथ प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन का ग्रेन हंगरी, पोलैंड और बाकी देशों के ग्रेन से सस्ता है। तो अगर यूक्रेन का ग्रेन उनकी कंट्री में आएगा तो वहां पे प्रॉब्लम पड़ेगा, प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे। और जैसे रशिया ने ये ग्रेन डील के ऊपर एक्शन लिया, ग्लोबल वीट प्राइसेस 1.6% बढ़ गया। वो बहुत ज्यादा है। रिसेंटली रशिया अफ्रीका समिट हुआ। उस समिट में प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ने ओपनली बोला, वी वुड लाइक द ब्लैक सी इनिशिएटिव टू बी इंप्लीमेंटेड एंड द ब्लैक सी शुड बी ओपन। वी आर नॉट हियर टू प्लीड फॉर डोनेशंस फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एंथनी ब्लिंकन ने कोशिश करी कि मॉस्को को यह बताने के लिए कि आप ब्लैक सी को ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ये था वेपन ऑफ वॉर। प्रेशर लगाया, ग्लोबल शॉर्टेजेस क्रिएट किए, प्राइस हाइक किया और ऑटोमेटिकली अभी भी प्रेशर बढ़ रहा है यूएस और बाकी देशों के ऊपर कि सैंक्शंस को लिफ्ट करो रशिया के खिलाफ और ये ग्रेन डील रीस्टार्ट करो। अब ये एक तरीका था रशिया का वेपनाइज करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए वेस्ट पे कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस है वो लिफ्ट किया जाए। एविडेंटली फूड के ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा था क्योंकि रशिया ब्लॉक कर रहा था यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स। अब साइमल्टेनियसली इंडिया ने भी कुछ एक्शन लिए। अगर आप पेपर पढ़ोगे, पिछले चंद दिनों में इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया कि शुगर एक्सपोर्ट्स अक्टूबर से बंद हो जाएंगे। पहले इंडिया ने, अब मैं ये जरा पहले समझा देता हूं आपको स्लाइड के जरिए। जुलाई में इंडिया ने नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट बंद कर दिया और 4-5 दिन पहले इंडिया ने यह भी पास किया कि बासमती राइस जो $1200 एक क्विंटल से कम रेट पे है वो भी एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। कारण ये कि बासमती राइस अगर 1200 से कम है तो इसका मतलब आप नॉन बासमती राइस को बासमती राइस बना के एक्सपोर्ट करोगे। तो ये इंडिया का लेटेस्ट ब्लॉक है। काफी जगह के ऊपर लोग खड़े हो रहे हैं पर इंडिया उस पर मुड़ नहीं रहा है। इंडिया का 40% ग्लोबल राइस मार्केट है, 15% उसमें से नॉन बासमती राइस है। पिछले साल हम लोगों ने 22.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया। कारण क्या है? इन्फ्लेशन, खासतौर पे इलेक्शन ईयर। जिस दिन इंडिया ने ये बैन लगाया, यूएस और कनाडा में इमरजेंसी परचेसिंग, पैनिक बाइंग शुरू हो गई। ग्लोबल प्राइसेस अब 2.8% बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर मई में हम लोगों ने वीट के ऊपर बैन लगाया था, पर वीट में इंडिया का सिर्फ 1% है मार्केट में। अब फर्क देख लो इंडिया का और रशिया का। इंडिया के केस के ऊपर तकरीबन कोई ग्लोबल क्रिटिसिज्म नहीं था। रशिया के ऊपर जो प्रेशर पड़ा और जो ग्लोबल क्रिटिसिज्म हुआ वो भी उसका कारण है। फर्क क्या है? पीएम मोदी ने भी बोला हुआ है कि हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान करेंगे,
कारण है दूसरा पॉइंट, इंडिया ने एक विंडो खुला रखा और बोला कि एक्सपोर्ट्स विल बी परमिटेड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। अगर आपको याद है, पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने 50,000 टन व्हीट अफगानिस्तान को भेजा। हमने लास्ट ईयर व्हीट के ऊपर बैन लगाने के बाद भी इजिप्ट, यूएई, बांग्लादेश, बहुत कंट्रियों को व्हीट दिया और राइस भी दिया। राइस इस साल भी अफ्रीकन नेशंस और बाकी जिनको जरूरत है उनको भेजा जा रहा है। एक कारण और है जो जनरल शंकर कह रहे थे, लास्ट ईयर चाइना का जो डिमांड था इंपोर्ट का राइस के लिए, उसमें से तकरीबन 30% इंडियन कंपनीज ने ये डिमांड मीट किया डायरेक्ट एक्सपोर्ट के साथ, और तकरीबन मेरे ख्याल $777 मिलियन का सेल था, ये ऐसे कोई फिगर था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट, पर ये कोई फिगर था, 30% ऑफ चाइनीज राइस डिमांड। अब इंडिया ने नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, और अब अगर बीजिंग को चाहिए तो बीजिंग को दिल्ली के साथ बात करनी होगी। और ये अगर आप फर्क देखो इंडिया और रशिया के स्टैंड में, इंडिया फूड को वेपनाइजेशन की तरह से नहीं रख रहा, बट पॉजिटिव डिप्लोमेसी, जैसे हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, जिनको जरूरत है उनको हम देंगे, चाहे हम फ्री में दें, चाहे हम रिड्यूस्ड रेट्स में दें। पर रशिया जो कर रहा था, रशिया ब्लॉक कर रहा था एक्सपोर्ट, ग्लोबल प्राइसेस को राइज करा रहा था, और उसको वेपनाइज कर रहा था प्रेशर डलवाने के लिए सैंक्शंस के खिलाफ, और यूक्रेन को ग्लोबल फूड मार्केट से बाहर निकालने के लिए। तो ये जो दो फर्क पड़ते हैं, इसमें आप समझ आ जाओगे कि वेपनाइजेशन क्या है और डिप्लोमेसी क्या है फूड के मामले में। अब जनरल शंकर बात कर रहे थे PL 480 के बारे में, ये एक स्लाइड में उसको क्लियर कर लूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। PL का मतलब था पब्लिक लॉ। ये 1954 में जब इंडियन फूड प्रोडक्शन बहुत कम था, उस समय इंडिया ने साइन किया था। ये काफी बार साइन किया 1960s तक। जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, यूएस का प्रेशर आ रहा था कि अगर आपको PL 480 और चाहिए, अब प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर लो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उस समय इंडिया की इंडस्ट्रीज का वो पोजीशन नहीं था कि हम बाहर वालों को यहां इंडस्ट्रीज लगा के हम उनके सबसर्विएंट हो जाए, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उस समय PL 480 बंद कर दिया। 65 वॉर के टाइम ये हालत थी कि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि सबको कम से कम एक मील सैक्रिफाइस करनी होगी। हमें भी याद है उन दिनों में, जब हम बच्चे थे, 65 में हम सिर्फ 10 साल के थे, और हमें एक मंडे के दिन हमें हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था। और ये हकीकत है, बहुत लोग भूल जाते हैं कि हमारा ये दिन गुजर गए हैं। और बहुत लोग आजकल ये बोलते हैं, आई वांट टू मेक अ पॉइंट, बहुत लोग बोलते हैं कि उन दिनों का जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, वो किया, आजकल क्या है। पर बात यह है कि उन दिनों का हालात जो है बहुत खराब था हमारा, और उस खराब हालत में भी उस गवर्नमेंट ने अच्छा किया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी गवर्नमेंट कर रहा है सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, पर आजकल के हालात अलग हैं। तो जब हम कमेंट करते हैं पिछले गवर्नमेंटों के बारे में, पिछले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, हमें थोड़ा संतुलन रखना चाहिए, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ जितने गवर्नमेंट को हमने चुना है, आफ्टर ऑल किसी और ने नहीं चुना, उस गवर्नमेंट को हमने चुना है, ठीक, हम देशवासियों ने चुना है, उन्होंने देश के लिए अच्छा ही किया है। कुछ गलत किया होगा, कुछ सही किया होगा, पर मोटे मोटे तौर पर सही किया है। और ये लास्ट तक आप जब जनरल हर्ष कक्कड़ बोलेंगे तो आपको पता चलेगा उन दिनों में भी गवर्नमेंट ने क्या किया। अच्छा, या प्लीज। अब 67 में जब C सुब्रमण्यम फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया, और 1968 में हमारा राबी क्रॉप 30% हायर था, 2 साल बाद डबल हो गया।
और वो कमेंसमेंट था इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ये है कहानी इंडिया के PL480 की। वेपनाइजेशन और फूड डिप्लोमेसी में फर्क कहां पड़ रहा है? हाँ सर, मेरा हो गया सर। नाउ वी आर ओपन फॉर Yeah, डिस्कशन। well, yeah, right. I would, also like to put across कि there was a little bit of, or how did we transform from being a food deficient nation to a, food surplus nation, and also milk deficient nation to the highest producer of milk. Today, after all, we are the highest producer of milk. And if you could talk a little about that Amul revolution and the green revolution, how it spread, it's good because people should know. So you see, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन था वही started with C. Subramaniam when you started the Yeah, agricultural policy, better seedlings, support to farmers, provision of जो उनको चाहिए था, the sort of the seeds, yeah, manure, seed technology. the technology you needed, plus you needed, the sort of the equipment for them to look after their fields, the canal system जो शुरू हो गया, Yeah, distribution of water, electricity coming down to villages. So ये जो change होने लगा, that is how the whole food system began to change. और change. अभी हमारे पास ये नहीं कि food stocks की कमी है. Even today, हमारा food more than enough. अगर आपको याद होगा सर, during COVID, when Shankar was in the US and he was questioned कि India का COVID is so bad, he says you must realize that India is feeding double the population of the US with Yes, free rations every month. He month. says that is what we are providing, and that is because of food surplus. A milk revolution began with Amul, sir. It started spreading. आज आप कहीं भी देखो, you got the number of dairies that are coming up today. We are again a milk surplus. So everything, it begins with governments, support to the private sector, चाहे जो सरकार हो, everyone gets into it and they work for the nation. Support to the private sector, the right policies, giving them benefits in terms of tax benefits and the rest. Abhi bhi today agriculture is on tax benefits, which is encouraging people to invest and do more. आजकल जो startups आए हैं, I mean, I've been I'm talking to people with it. उनका काम है to interact at the village level, advise farmers on crops, provide them जो सामान चाहिए for the crops with the best of the backing, and pick up the produce. So for the farmer, it is a benefit in all directions. The risks are minimum. Aaj Sarkar is even offering you insurance at the crop level. So everyone is working to help out and improve the system, and that is where we are. या आई थिंक आपने अच्छी तरीके से ये बताया है. मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, और ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये सिर्फ पिछले हफ्ते की बात है. पिछले हफ्ते हम गए थे देवलाली, एंड आई ड्रोव फ्रॉम पूना टू देवलाली. और मेरे को याद आया, जब हम यंग ऑफिसर्स थे, जब हमने ये सफर तय किया था, वहां सिर्फ बंजर जमीन था, और बिल्कुल इट वाज ब्राउन, एंड नथिंग वाज ग्रोइंग, कुछ नहीं था. अभी जब हमने ये ड्राइव किया, तो क्या क्या हमने देखा कि ब्लैक कॉटन सॉइल, शुगर केन ग्रो हो रहा है, ग्रेप्स ग्रो हो रहे हैं, wheat is growing, and all kinds of crops are growing. और तो और milk cooperatives, and along this thing I saw at least 2-3 universities coming up, and the Sir, change look, in no, I said change you're was looking at this. Look at Rajasthan, sir. जो वो border था, Rajasthan. जो हम शुरू में जाते थे, that whole area was absolute desert. उसके Correct. बाद once the Rajasthan canal came, Canal लोगों ने जो came. तैयारी करी, today it is one of India's most productive regions. Regions, yes, I agree with you completely. मैं ये सब किस लिए बता रहा हूँ, राइट, सबको, कि हम सब सोचते हैं हम चाइना के पीछे हैं, या हमारा उन्नति नहीं हुआ है, हमारा इकोनॉमी ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. पर बात वो नहीं है. बात यह है कि हमारा जो शक्ति है, इट ग्रेट पावर टुडे कम्स फ्रॉम फूड.
और मैं सोचता हूँ कि आई मीन लेट मी आस्क यू, don't you think this should be a determinant of global power index, a capability of uh, food, or having surplus food, whatever you call it, agricultural produce? Sir, if you look at it this way, you see, that is why I'm saying when we talk of food diplomacy, today, Yes, how are we making ourselves felt? Today, why is it that Africa is looking towards India? India. जहां पे उनको दिक्कत है, they had problems during COVID, we provided vaccines. आज we are the ones who will be supplying them with rice and wheat. Now give you another example, sir. अब आप देखो अफगानिस्तान, जब तालिबान आया, everyone was discussing of the Taliban coming into Kashmir. इमरान खान was prime minister of Pak. उसके spokesperson ने टीवी में आके बोला that the Taliban have promised us they will get us Kashmir. क्या हुआ सर? 2 years later, India is the only one जिन्होंने उनको 50,000 tons wheat दिया. Wheat diya, yeah. We gave them medicines. We are still giving them medicines. We are still helping them out in terms of funding. Aj, today, there is not an anti-India terrorist group in Afghanistan. Afghanistan. Now, Eh, the Indian और embassy तो वो has reopened. It's with a time, it's got a technical group, but it's reopened there in Kabul. yeah, I agree with And you. and Pakistan is facing the brunt from Afghanistan. Afghanistan, correct. फर्क सर फूड डिप्लोमेसी टुडे अगर हम काउंटर कर रहे हैं चाइना को इन अफ्रीका वी आर काउंटरिंग इट विद आवर सॉफ्ट पावर which if you look at it was vaccine diplomacy, it's food diplomacy. Aaj we are moving towards education diplomacy. If Jaishankar can inaugurate in Tanzania and in Tanzania IIT ka branch. Yeah, और IIT. Let me tell you, IIT Madras is opening a Okay. branch And there. also, I think it is in somewhere else where they've opened up a branch of the Forsenic Laboratory of India. So you're giving 50,000 education scholarships to Africans every year. So our diplomacy is not of loaning money, sir. Our Yeah, diplomacy is soft power, which employs food, which employs vaccines. So we are able to exploit what is with us without pulling those nations into debt traps. yeah. I think you made some very valid points. What I'd like to highlight is what General Kakar has mentioned is that food is being weaponized. There's no doubt about it. The problem with weaponization of food, the Russian method, it is hard, right? It induces anger. But we are also weaponizing food. We are weaponizing it through global diplomacy. Our method of weaponizing is soft weaponization, so that we convert this food into soft power and get goodwill. And I think between the two, this is the better method. There's no doubt about it. Now, let me ask you a question. How do you think we can maximize this even more? Because in days to come, there's going to be a problem of climate change, but still we need to cope with it, feed our own people, and then still continue to do this. How do you think? Do you think we need some reforms? Vagara, vagara? Sir, as far as ours is concerned, agricultural reform should continue basically with the intention of exploiting each region, जो उस region के लिए खास product है. You see, the intention is कुछ regions are specific for a particular product. They can be exploited. आपका simple example था between Pune and Nasik. That is black cotton soil. अब लोगों ने सीख लिया कि in black cotton soil what can be done. Yes. So you are now exploiting the soil for what it can give you. We need to get more of scientific knowledge involved at the village and the grassroots level so that we don't over utilize the soil. So we need to get that sort of a technology which we are slowly moving in. Then there are areas like Rajasthan, you see that now as a green belt, sir. Yeah, there's no You doubt. are turning regions which were otherwise a waste ground.
Now, at the same time, sir, population बढ़ रहा है. So unless your yield per acre increases, you will not be able to cater for the growing population because the demand for growing population is land. So as the population grows, sir, you see the way cities are growing. So what are they eating into? Agricultural land, which are that is how cities are expanding. Yeah, yeah, So इसमें unless the correct. balanced agricultural land is able to increase its productivity, the world is going to go back into a stage. As per the WHO, sorry, the World Food Program, as per them, there is no shortfall of food globally. But problem ये है कि nations weaponize करते हैं, nations restrict करते हैं sale, nations block करते हैं. So that is causing an artificial shortfall. Artificial shortfall would be increase in prices. जब price increase होगा, there'll be smuggling. You find that happening a lot in Yeah, Asia between Iran, Afghanistan, Pakistan. That belt, wheat goes from one nation to the other. yeah. I think you made some very valid points. Or I just want you to put it across how this capability which we have of our agricultural capability, which many people nazarandaz kar diya sabne isko, makes us into a global power. And maybe it's my view that our agricultural capability will help us knock at the doors of the UN Security Council more harder than our other capabilities. Your views on it? Sir, we have, you see, like the way our soft power is moving, I'd like to combine that all into soft power. Okay, yeah, because first class. because food is one part, vaccination was the other, today education, today funding. We are getting involved in multiple ways. I mean, the way when the PM landed in Papua New Guinea and the way he's been treated by African nations is a world of a difference. That is our soft power which is being projected. Now soft power gives you support of nations of the global south. But when you look at the UNSC, there's only one country which has put a block, and all have to agree. Yeah, और वो agree. block नहीं lift करेगा because of its own compulsions. Yeah, yeah. But the We know world that. knows where you are. Yeah, yeah, there's दुनिया no doubt. आपकी तरफ देखती है because of your power, because of your ability. So I agree globally, with you. अगर आप देखो, there is no nation which doesn't want to tie up with you. अगर आप एक महीने के अंदर collection of visitors to India ले लो and any other neighboring country including China, you will realize India में 4 या 5 गुना ज्यादा है, because they want to come in with you. That is the difference. That Yeah, is the I think projection of your that soft power. I think you made some very valid points. आपने ये बोला कि कौन सा कंट्री है जो हमें यूएनएससी में आने नहीं दे रहा, वो तो चाइना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैं थोड़ा चाइना का फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ. एंड देन आई वांट योर कमेंट्स ऑन इट एंड हाउ डू वी हैंडल दिस पैराडाइम व्हिच इज देयर, बिकॉज आपने बताया कि चाइना हैज नाउ स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम इंडिया for various reasons, right? And I don't think it'll ever get out of it also. So let me show this to all of you. ये मैंने एक वीडियो बनाया था 10 दिन 15 दिन पहले on food security in India, China, maybe about a week, 1 month back. ये all viewers can see it. You can see it in the playlist of Peek into Everyday China. दिस अगर आप देखोगे तो ये चाइना का मैप में भी वो ग्रेन्स, और ये जी जिनपिंग एक खेत में खड़ा है. ये व्हाई आई एम शोइंग दिस इज, हर 2-3 महीने में जी जिनपिंग आके बोलता है कि फूड टेक्नोलॉजी ये करो, फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दो, वगैरह वगैरह वगैरह. क्योंकि चाइना का मेजर प्रॉब्लम, हिस्टोरिक प्रॉब्लम है, वहाँ अकाल पड़ता था, खाना नहीं होता था, क्योंकि उनके पास एरेबल लैंड बहुत कम है, और इट इज इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल फूड इनसिक्योरिटी. हालांकि उन्होंने काफी ग्रेन्स वगैरह क्या है उन्होंने इकट्ठा कर लिया, स्टोरेज कर लिया, वगैरह वगैरह. दो दे से दैट देयर इज नो इनसिक्योरिटी. अगर बोलने के लिए तो बोलते हैं, पर हर 2-3 महीने अगर आप, हमारा प्रधानमंत्री आके टीवी में या हर जगह बोलता है कि भाई खाना के बारे में ध्यान रखो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम देयर. और यहाँ देखिए 2-3, अभी ये सिर्फ
महज एक हफ्ते पहले की बात है. China to expand GM corn soybean trials amid rising food security focus as Beijing seeks to dispel public safety concerns. Right? और ये बोलता है हेबे, जियान, जिलिन, सिचुआन और यूनान and Inner Mongolia to play a role in expanding a trial of genetically modified corn and soya. उनके पास है ही नहीं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है. राइट? ओके, ओके. नेक्स्ट बात ये है, व्हाट इज द स्टेट. एक और आर्टिकल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का है ये. राइट? ये सब तीनों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का है. व्हाट इज द स्टेट ऑफ चाइना's फूड सिक्योरिटी ड्राइव and what must be done to feed its people. From technology to tumultuous trade ties, China is finding it a challenge to guarantee sufficient crop yields, but drastic measures are being taken. ठीक. But next point देखिए, climate change and supply chain upheavals have also forced a rethink on how best to ensure that critical grains remain abundant. Okay. एक ये sorry. Okay. ये sorry, this is a repeat. This is a repeat. Okay. Now जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर अगर आप पिछले एक महीने 2 महीने या इसमें देखोगे तो there's been lot of floods in China and lot of crops have been washed off. पिछले साल इनके drought था and at that time also they had a lot of problem. So here we have a situation where China is a food insecure nation, or I will not say insecure, food deficient nation, and we are food surplus. How do we handle this situation? How do you think we should go about? Because then you have a leverage against China, and now what is emerging कि China हमारे बिना वो चल नहीं सकता उनका काम. Sir, you see, the three major producers of rice जो चाइना को import करना है are Indonesia, Philippines, Vietnam, India. We are the amongst the largest. Yeah. 30% market हमारे पास है, 40% market. अच्छा, चाइना ने लास्ट ईयर हमारे से 30% लिया था. The actual story of China is China has only got 7% arable land. Arable land, yeah, I agree with you. Right. So with the point and with their population, there is no option but to import. अब जो इंडिया ने ब्लॉक कर दिया, no export of non-basmati rice, automatically, and it's said on a case-by-case basis. इसका मतलब there is no option but to approach the government of India. And if Beijing wants to approach the government of India, the terms and conditions will be of Delhi. How we want to push it, अभी नहीं है. Within 2 months, 3 months, it has to come. अभी हमने लगा दिया because we are very clear that it is going to come up. Last year, we provided 30% of the total imports. अब इस साल it's going to be difficult. So this is where, sir, we'll be able to play the game. अब ये आएगा possibly in a few months' time because the requirements are going to begin. शुरू में they will tap Indonesia, Philippines, left, right, yeah, Vietnam. These are the countries that export. उसके बाद ultimately they've got to fall here, and we are in no hurry. So when they come here, that is the time possibly the game will be played. Will play. और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, this is for the normal story, right? अगर कल के दिन ये चाइना आके एलएसी के ऊपर हरकत करे, ये करे, वो करे, हम ये मलाका स्टेट को अगर थोड़ा बंद कर देंगे और वहां if you put your navy around, carrier ships which have to take food from other places into China, उसको भी हम रोक लगा सकते हैं. और जिसके पेट में खाना नहीं है वो चूहे दौड़ेंगे अपने आप. Am I right? Absolutely, sir. But you see, for them, the major imports will be Indonesia, Vietnam, and Philippines. उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं, बट वो तो राइस के लिए है, बाकी चीजों के लिए तो बाहर से आता है. Wheat तो उनको नहीं, wheat उनको रशिया से आएगा. That will possibly come on that route because the major, in fact, ये जो यूक्रेन के अंदर the two major strikes by Russia, when they destroyed the 60,000 tons and the 40,000 tons, उसमें से the majority stocks were to go to China. तो चाइना को में किल्लत है और इसमें डाउट नहीं है, किल्लत तो पड़ेगा उनको. Correct. Right? And अगर हम यही चीज आप थोड़ा और open it out,
यूएसए से इनका कंप्लीट सोयाबीन इंपोर्ट है, राइट? सोयाबीन इंपोर्ट, और सोयाबीन के बिना इनका जो सुअर जो है सोयाबीन खाते हैं तभी वो मोटे होके इनको पोर्क मिलता है। अगर इंडिया और यूएसए मिल गया तो चाइना का हालत बुरा हो सकता है। मैं सिर्फ आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं कि चाइना एग्रेसिव हो रहा है, हमारे पास पेचकस है उसको ढीला करने के लिए, राइट? यही है। क्या तरीका अपनाएंगे वो अलग बात है। क्या हम वेपनाइज करेंगे जिस तरीके से चाइना वेपनाइज करता है, डेड ट्रैप डिप्लोमेसी ये वगैरह, या सॉफ्ट पावर के जरिए करते हैं वो हमारे, डिप्लोमेसी के जरिए करते हैं वो हमारा ये है। So this is what I thought we will put across. You have anything else, Harsh? Put it नहीं सर, across. नॉट एट Otherwise, ऑल. we'll take some questions. We'll take some questions. ठीक है सर. Yeah, we'll take some questions and some views also. At the outset, I'd like to thank Gaurang for your super sticker, and I also like to thank uh, Latia Pachpan, Namaskaram, and thanks a lot for your super sticker. Also, oh, first, yeah, this is very nice to you. Good to see General Kakar. His appearances are few and precious. Oh, yeah, he's very precious to me also. We'll make it a little more unprecious when he comes more to gunner shot. Okay. 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 Right. Jayan sir, your videos help me in making my views about China rather than depending on their propaganda. I share all your videos with SS. Yeah, you must, because don't go by propaganda. Okay. There's a lot of this thing. Yeah. Question. Dependence on wheat and rice production, particularly rice production, has depleted Punjab's water table severely. Now the push is to make Punjab move away from rice to save groundwater. So, any comments on this? No, sir, this is part of the, you see, as and when you realize there's a difficulty, that's what I said. The government is into it. You're looking at changing the crop pattern. You're looking at changing the systems basically to meet the conditions under which they're being grown and where there is a shortfall. Yeah. What Srinivas says is, sir, we are one of the largest producers of many vegetables, fruits, rice, etc. But we hardly look for export markets. How do we overcome the political impasse? See, export markets are few, but largely to the Western world, with the amount of restrictions in terms of quality, use of insecticides, and the rest, there are issues. But to other nations, especially if you're looking at other nations in South Asia, whether it's Sri Lanka, whether it's Bangladesh, even down towards Africa, we are still moving. But though the quantities are not so much, but like if you realize that when it came down to the tomato prices going up, we immediately imported. And a similar thing happened. We had to block export of onions to ensure that the onion prices don't go up. So it doesn't mean that we are not exporting. We have the Yeah, option we, and we we do it. have the option. And we have the levers to handle it also. Actually, this would have been very ideal export to Pakistan had trade continued because they were one of our main customers for vegetables and the rest. Yeah. Okay. Uh, for Punjab, rice anyway is not, this is only for Punjab, Correct. right? Yeah, not a traditional cultural diet. Instead, we import pulses and edible oil. How should states like Punjab and others make Bharat self-reliant in pulses and edible oil? Sir, the crop pattern will depend on the way I mean, especially for those who are scientifically qualified. And I think they would know better and they would be determining the manner in which the crop should go. Plus, the Yeah, farmer, he's also looking at a very suitable return. Now, yeah, he is not be keen to pick up crops which don't give him a return. There was a time, agar aap recently dekho, the apple farmers of Himachal were just throwing away the crop because the yeah, price being offered was way below what they had invested. So it's a give and take by all sides. It yeah. cannot just be a one single sided वन thing. साइडेड थिंग। एंड इसी में मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो फार्म लॉस थे वो बुरे नहीं थे, जो गवर्नमेंट ने इट वांटेड टू इम्प्लीमेंट, एक्चुअली इट बेनिफिटेड एवरीवन. It became a political issue by the opposition and they got scrapped. And very funnily, these were the same farm laws which were mooted by previous governments.
right? So we lost politically on this farm loss and the whole thing. Why I am mentioning this is आज के दिन climate change का असर हो रहा है. We have lost a lot of output of rice because of extreme heat in the summer, and it's going to change. And plus the fact that we like ये जिसने जो ये सवाल था ये इसमें बड़ा क्लियर था कि we continue to import edible oil and pulses. We have to rebalance our whole cropping pattern जैसे जनरल काकड़ ने बताया, and we have to rebalance with uh, climate change. So there is a lot of stress which we have to put today on one our laws and policies, which we have to I think rethink the farm laws altogether. I wouldn't say rethink; we have to probably get them back in a different manner, whichever way. And we have to focus on re-technology, a new technology to cope with our climate change and change our cropping patterns. And I think that's going to be an important thing in days to come. Any views on this, Harsh? No, sir, with you, sir. I mean, we just have to do. I mean, this It dirty will come. politics between, yeah, Sir, I mean, today most of the issues that we deal with are political. I mean, the political. logic Oh, for objecting or fighting is different. So, different. राइट और एक दिन दूर नहीं है देन ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं करेंगे तो इन दोनों को हम नाकार कर देंगे, मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों के पेट के ऊपर लात नहीं पड़ सकता, और हमारा जो शक्ति है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हमने 75 साल लगा हमें पाने के लिए, खो नहीं सकते हम. Okay, my only wish is somehow we as a nation can increase yield per hectare to twice of today's yield. Will be great. We also hope so. There's no doubt about that. Uh, okay. Ask General Kakar. Post Taliban rule, the last remaining Hindus and Sikhs in Afghanistan were also driven out. They hid in Gurdwara. Look, we'll not talk of this today. Today we are talking of food and technology. You come, we'll talk some other day of this. Okay, right. Now this is factology. When Middle East, Russia weaponize oil, why tit for tat action by proportionate increase on food products exported to other countries? doesn't make much sense because food is something which one can use not as a weapon but definitely for diplomacy. I think that is the right Diplomacy. approach. Yeah, look, we have to understand our strength is gaining trust. Our strength is soft power. Our strength is, having people around us. Okay, we have never weaponized these things. ये हमारा कल्चर में नहीं है, हमारा स्वभाव में नहीं है, राइट? जिस दिन हम ये जिस तरीके से चाइना करता है या रशिया करता है हमने शुरू कर दिया, तो हम में और इसमें इनमें क्या फर्क है? एट द एंड ऑफ द डे ये जो पीपल्स इश्यूज में है हमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए. ओके, our milk production has fallen this year. Head of Amul told this on CNBC. Not This is a much. It is still okay. seasonal seasonal variation. There's no problem. Okay. Uh, Soft is stronger than hard. Try to bang two bricks and they crack, but a brick does nothing to do a bag of cotton. I agree with you completely, John. Okay, ask General Shankar sir regarding water stress. We need high power water desalination plants in East Coast and Gujarat, and water has to be pumped into central India to mitigate climate change. Your thoughts? Any thoughts of yours, Harsh? So I think we are looking at the Israeli technology in this. I Yeah, think that is because even when the PM went there, there was a lot of discussion on using their desalination plant. So let's see what finally flows out. yeah. एक और चीज है, we have to look at the overall water map of India differently. We have to seriously look of water transfer from the Indus basin to the Ganga basin. क्योंकि हमारे पास जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमें जो पानी मिलता है हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको पूरा. अभी भी बहुत पानी है जो हम गंगा बेसिन में ले सकते हैं. देन वी हैव लॉन्ग स्टैंडिंग नॉर्थ टू साउथ वाटर ट्रांसफर प्लान, वो भी नहीं हुआ. एंड देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच मेनी पीपल डोंट रियलाइज. अगर आप गंगा को देखिए, ये 2 दिन पहले भी मैंने बताया था, गंगा को देखिए,
in Ganga or the Ganga system, during summer, the main tributary of water comes from the Deccan, that is Chambal. Water from Yamuna and the main Ganga is a trickle, because the dams upstream take water out into the canal systems in UP and all those places. So maximum water comes from Chambal, and Chambal cannot be dammed for various reasons. So actually, Deccan is a water trap, and I think we need to handle this better. तो इस तरीके से हमने नर्मदा को इस्तेमाल किया और ताप्ती रिवर में भी अंडरग्राउंड वाटर बहुत है. द वाटर टेबल इज प्रीटी हाई. इफ यू गो टू सेंट्रल इंडिया यू विल रियलाइज. And then, of course, the Godavari and Krishna basins also we have to do. We have to do something more than just desalination. I think we We are have to now do working at linking these rivers. So linking that's these already rivers in progress. That's in already in progress. progress. That Yeah, is going to take and time, but it is in time, progress. right? So I think we have managed our water much better than many people. We have been realistic and slow but steady. And don't आप सबको याद रखना चाहिए जैसे जनरल कक्कड़ ने बताया, we have one of the finest water transfer projects in the इंदिरा गांधी नहर, जो हमने हुसानी वाला से लेकर बारमेर तक हम पानी लिए. और आजकल मॉडर्न तरीका है वो जो हमारा जो नर्मदा सागर से हम पानी जो लेके गए इनटू एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात. एंड अगर आप उस इलाके में जाओगे कच्छ और नॉर्थर्न एरियाज में, आपको फर्क नजर आएगा कि किस तरीके से गुजरात भी हरा हो गया. ओके, वी हैव स्पोकन ऑफ दिस, राइट. Any other questions? Right, there are. Yeah. Okay. Karthik says, how much of a there is the threat of water table for India and Indian food security? Karthik, we've There is no answered, but doubt. There is yeah, no doubt that there is a threat of water table. I mean, every year it seems to be receding. But at the same time, you are creating alternate sources by canals, by linking up rivers, and possibly you're bringing a lot of change. If you look at the rainfall, you count on it to bring up your water table at the end of every rainfall, at the end of every rainy season. So you're working on multiple means, you're carrying out linkages. So hopefully things should come up. let me give you a personal example and experience in this. Chennai, the city in which I stay, it's a mega city. It's water deficient ever since I've known it. और इसमें क्या है कि 15-20 साल पहले Chennai had tremendous water shortage, and this water tanker economy is kicked in and it's still going on and all. But Chennai has now put in a water recharge system. It is mandatory for every society house to have a groundwater recharge system. It's mandatory. You can't build a house without that. So as a result, the water table has gone up, and now the expansion of the city is being managed. Of course, there are tankers coming in and all, but it is being managed. We have come to manageable levels. And I'm sure many other cities and mega cities are also doing this. So it is not as if we are not managing it, we are managing it. But do we need to do more? We need to do more. Should we do something about our groundwater depleting levels? We need to do more. Should we need to do something about cleaning up the groundwater and ensuring that pollution reduces? We need to do more. And here I want to put one more issue, and I would like your opinion on this also, Harsh. कि देखिए, you want to progress and develop and become a manufacturing economy. अगर आप manufacturing economy बना दोगे अपने आप को, तो pollution भी increase होगा. और manufacturing economy बना दोगे तो you need water also. बिना पानी के आपके फैक्ट्री नहीं चलते, और बिना पानी के आपको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलता, राइट? सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस कि किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से हमें ये करना है ताकि पोल्यूशन ना हो. अगर क्योंकि पोल्यूशन हो तो इट विल बिकम नेगेटिव साइकिल लाइक इट इज हैपनिंग इन चाइना. हमारे पास पानी नहीं होगा. योर व्यूज, हर्ष? Sir, you are working at balance because agar aap dekho, we are first heading towards solar energy. Yeah. Look at the way we are moving towards that sort of energy. We've already achieved targets जो 3 साल आगे के targets हमने achieve कर लिए. You're looking now at water harvesting. You're looking at various means of doing it. There are issues, political issues, and disputes between states and regions, but it is being pushed. Push, You right? are making your roads.
You're making your networks wherein you are going to be able to save a lot in terms of, with proper roads, the fuel consumptions are better, things are better, so pollution levels are controlled. So a lot of things are being done It has been done. simultaneously. Yeah, I agree with you. And it's not that you are ignoring it, but you're moving through it steadily. Yeah. Okay. Respected sir, few minutes ago, news flashed that China had altered its map showing Arunachal and some parts of Ladakh. Maps don't Look, change trees. they've No, just put a map. map. Some time back, Pakistan produced a map which said complete Kashmir with an open ended with nothing on the other side. It did Yeah, not change the status of Kashmir. right. वो तो वही का Uh, वही है हमसे पास वही ही है, है. So nothing मैप will जितने change on प्रोड्यूस ground. करने हैं, करते रहो. वो तो politicians झगड़ा करते रहेंगे, but on ground nothing will change. Yeah, don't worry about it. In any case, I've written an article today for Financial Express. Tomorrow it'll be out, or tonight it'll be out. When it comes, I'll put it out. And maybe in our next round of open session, we'll talk of it. It's not a great thing. There are implications in South China Sea. We'll talk about it later. Okay. Right. This is an interesting question. Sir, please provide your views on of Israel food technology, which will help India. So Yeah, basically, you see, their food technology is based on water shortage, lack of water supply, and high levels of production, largely hybrid. To a large extent, India has taken it and we are implementing it. अगर आप देखो, we find a lot of hybrid fruit trees which are in progress. You find a number of places we already have. I mean, जहाँ पे हम लोगों का, if you find the grape orchards which are there, they're all basically based on a similar type of technology. You cannot copy the Israeli model in India, completely. Yeah. but definitely you've modified the model to suit our requirements. In fact, I remember earlier there were major technological teams that were moving to Israel to study their models and to try and implement the same or modify the same for India. In fact, our government of India establishments which are functioning on food के ऊपर जो भी उनके studies चल रही हैं, they are applying Israeli technology but modifying it, including getting their own, getting seeds from there, getting the basic plants from there, modifying it for Indian conditions and distributing. Yeah. Okay. The next question is, what's best for the country, traditional crop or cash crop? We need to have a It balance, depends on individual and and the it area. depends on the area. A lot of things are involved, so you can't give a prescription. Okay. Okay. Let's take this question. Rather than allowing farmers to dispose oversupply of apples, why not allow food industries to It value was add? not oversupply. The problem जो हिमाचल में हुआ था, the government was not giving the rate which they wanted. अगर वो food industry को बेचते, then the government would have had no, I mean, would have won the battle. But अब इन्होंने जो destroy किया in protest, and this was done, you have to remember the orchards in Himachal are not owned by poor people. They are owned by the huge orchard owners and they are massive business guys. तो उनका है, so it didn't make very much of a difference, but it sent a very strong message. Yeah. And it was more Uh, political. Yeah, he says, why don't we grow olive and palm trees in Rajasthan and Gujarat because it needs desert That type I'm of not an soil expert. and irrigating it with hydroponics? And why are we exporting rice to China on our subsidy? We are Look, not. Shano, Firstly, there is we are no not. subsidy. Subsidy. Secondly, it was in the open market last year. जो private dealers था who would buy the rice from the market, they were exporting. But इस बार तो they can't do it. Anything that has to be done is government of a government, government to government, or government of India rates. Yeah. As far as olives and palm trees and all, we are doing it slowly. ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है. And these things, you can't do overnight. You can't do overnight. I've seen hydroponics in Sikkim also. So, right there are technologies being adopted. So don't you it'll come. It'll evolve. One day you will see this blown up. Yeah. Okay. Since he's talking of former President APJ Abdul Kalam stressed the need for interlinking rivers and water bodies to solve the problem of water shortage, saying futures wars would be over water. I agree with you. General Kakar has already said, and we've dilated a lot about water. So
thank you for the question. Next is pranams to our esteemed generals. We keep reading news about how inadequate we are in storage facilities of perishable goods and surplus grains. Do we have a policy for that in the works? So FCI, Food Corporation Yeah, of India, yes, is responsible. उनके पास है. There is a shortfall. There are problems, but then the sort of coverage that they're giving, in fact, and the rate at which we are providing, yes, काफी जगह के ऊपर the grain is wet, but then it is not to that level that this is meant to be destroyed. They're still edible. In yeah. fact, I think हमने कहीं इजिप्ट को या कहीं बेचा था. They said that the grain was wet or it was not suitable, but another nation grabbed it immediately because And there is a global shortage. एंड नॉट ओनली दैट, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना जो फूड स्टोरेज फैसिलिटीज अगर आप कंपेयर करते हो चाइना के साथ, ये मैंने 3 साल पहले किया था एक कंपैरिजन, you realize that you're far better than China in just in terms of shortage. I mean, storage and handling it. When China 3 years back, I think I read it. When they said they had X amount of storage facilities and X amount of grain storage and all. Actually, when they did it, they found it was 20% short and unedible. So don't think that we are bad. There might be problems, but we're not that bad. Okay. Uh, That is for General you, sir, sir. how? Huh? That is for you, Yeah, your home state. yeah. Your home state of Andhra Pradesh made some advances in agriculture. Whenever I plant a fruit tree, the plant nursery guy says the best fruit trees come from Andhra. How did this happen? Technology, just pure technology. Let me give you this thing. There's one friend of ours, uh, General KG Krishna. He's retired and settled in Andhra. His house is on the almost on the banks of Godavari River. He was a DGMI. Wonder if you remember him. He was the I know, KG is my yeah, scones. yeah, Scott. So he was having dinner with me the other day, and he was saying, and he is growing some fantastic roses in his house, right? Huge teas. And I said, yeah, how do you grow roses there? I can't grow anything here. He says technology. And people in that belt, complete Andhra belt, have taken technology like nobody's business. The kind of prawn farms which they've come up, the kind of fish farms which they've come out, chicken and egg farms which they've come out. I don't know if you people know, for the past 15, 20 years, not now, for the past 15, 20 years, Andhra has been exporting eggs to the northeast. Andhra has been exporting fish to the northeast. you know so it's a revelation when you come to know what's happening in our country. Many of us don't know what's happening in our country. We come to know, being Faucis, we go everywhere, so these things we get exposed to things, right? Yeah, and let me also tell you something to be proud of. Gladiolas from Kalimpong get exported to Amsterdam. From Nasik, sir. Nasik, yeah. They Okay, go all so over the world. world. So don't, we are quite a power. Why am I talking of all this? The day we want to really weaponize it, we can weaponize it. Though it's not in our hand to do it. Okay. S- Sir, is it true that China is working on diverting Brahmaputra They're water? If so, they're what are we doing? building dams. They're Yeah, basically building dams with the aim damn. of controlling the water supply, which could at some stage become weaponization of water. But But we've been, I हमें mean, कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमको Let इतना नहीं me है. It will be more impact on Bangladesh Bangladesh. because देखिए, Bangladesh is the final area where the water starts moving out. So the impact is going to be largely on Bangladesh. see, let me put it this way. I've done a full video on this. It's called Dams on Brahmaputra. Search and peek into everyday China and search in nothing, you will get this. What I want to say is the main Brahmaputra, uh, Siang, which comes down from, the, क्या बोलते हैं? In Bhutan, sorry, in Tibet it's called Yarlung Sampo. Then it comes down and turns into Siang, and that Siang turns into Brahmaputra at Lohit and Pasighat. then And then, Lohit yeah, and it then joins Brahmaputra. Lohit. Complete, the contribution of the main tributary to the Brahmaputra is just about 8 to 10%. So a dam on that doesn't affect us. And if you put a mirror dam on the other side, you will control the flow in your own stream and it's okay.
It's not a thing which we have to really worry about. But it's something. There are other effects. See that video I've done. I did it about 4 5 months back. Dams on Brahmaputra. Just go through it and you'll understand the whole thing. Okay. Okay. I don't see. Yeah, I don't see any other questions. Okay. So yeah, that's all I have. I thought some interesting questions, some interesting observations, and last I would like to put across that global ट्रेंड लाइन ये है कि फूड को वेपनाइज करो. इसमें कोई दो राय नहीं है. आगे जाके भी ये फूड वेपनाइजेशन चलता रहेगा और इसमें हमारा ताकत बहुत है. हमारा ये रवैया है कि आज के दिन वी यूज फूड फॉर इन डिप्लोमेटिकली. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम वेपनाइज करना चाहते हैं, अगर इफ इट कम्स पुश कम्स टू द शॉव, वी कैन वेपनाइज इट. और ये भी मैं बताना चाहता हूँ ऑलवेज द इम्प्लाइड थ्रेट इज मोर देन द अप्लाइड थ्रेट. राइट? वी आर नॉट अप्लाइंग अ थ्रेट, वी आर अप्लाइंग सॉफ्ट पावर. And we always have this implied threat which can always be weaponized. So let's not underestimate ourselves, and we should have confidence that we are a global power. Right? This is what I had to say. Harsh, the last word is yours, and Nothing, then sir. Thank you very much. You've summed it up beautifully and absolutely right, sir. yeah. Thank Thanks a you lot very to much the. for giving me a chance to be here, sir. No, no. This is the first of the chances. You're going to come back again and again. You know, I can talk to him like this because we worked in the same office, right? So we've grown through the same this thing, and we are both gunners. So with this, thanks a lot to everyone. Thanks a lot, Harsh, especially. And once more, my apologies. I Nahi, got you nahi, sir. rather late Not on at all. gunner shot. And Not at thanks a all, sir. lot to all the viewers for watching this show. ये थोड़ा हटके है, but is it important? Thank you. Good evening and Jai Hind. Jai Hind, sir.